नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट से। ऑन मंडे ऑल मेजर यूएस इंडाइसेस सर्ज्ड अर्ली इन द सेशन but pared gains as the day progressed. The Nasdaq and the S&P 500 held on to positive territory, closing with the gains of 1.09% and 0.55% respectively, while the Dow slipped 0.06% to end slightly lower. The Brent oil has tested its 200-day EMA level and thereafter witnessed a correction of 1.56%. Going ahead, the 200-day EMA zone of 77 to $77.3 will act as an immediate hurdle for the Brent oil. The US dollar index has ended on a negative note for the second consecutive trading session. However, it has taken support near its 20-day EMA level and thereafter witnessed a rebound. Going ahead, the 20-day EMA zone of 107.9 to 107.7 will act as an immediate support for the index. अगर हम निफ्टी की व्यू की बात करें, द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी एक्सपीरियंस्ड अ शार्प करेक्शन ऑन मंडे, क्लोजिंग एट 23,616, डाउन 1.62%. This decline pushed the index below its 200-day EMA, signaling weakness. Additionally, the daily RSI has given a bearish crossover, further indicating negative momentum. आगे बढ़ने के साथ द रीसेंट स्विंग लो ऑफ 23,470 टू 23,450 को एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में देखा जाएगा। अगर ये लेवल 23,450 के नीचे जाता है तो शार्प करेक्शन 23,260 तक आने का चांस है। ऊपर की तरफ 23,730 टू 23,760 का जोन एक इमीडिएट हर्डल के रूप में काम करेगा। ऑन द डेरिवेटिव्स फ्रंट, द जनवरी फ्यूचर्स dipped by 1.54%, while the combined open interest for the current, next and far series also dipped by 1.16%. This indicates an overall long unwinding. The 23,800 strike has significant call open interest, followed by the 24,000 strike. On the put side, the 23,500 has a substantial open interest, followed by the 23,300 strike. For the weekly series, the OI PCR is at 0.56, and for the January monthly series, it is at 1.17. The Bank Nifty also witnessed a sharp sell-off on Monday, and most noteworthy, it has slipped below its 200-day EMA level for the first time since November 2023. Going ahead, the zone of 49,600 to 49,500 will act as a crucial support for the index. Any sustainable move below the level of 49,500 will lead to a sharp correction up to the 48,900 level. Talking about the Sensex view, the benchmark index Sensex also witnessed a sharp correction on Monday and it has slipped below its 200-day EMA level. आगे बढ़ने के साथ 77,500 टू 77,400 का जोन एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये लेवल 77,400 के नीचे जाता है तो फर्दर करेक्शन 76,800 तक होने का चांस है। ऊपर की तरफ 78,400 टू 78,500 का जोन एक क्रूशियल हर्डल के रूप में देखा जाएगा। ऑन द डेरिवेटिव्स फ्रंट, द जनवरी फ्यूचर्स dipped by 1.57%. And the open interest of the current series has also dipped by nearly 20%, which indicates an overall long unwinding. The 78,000 strike has a significant call open interest, followed by the 78,500 strike. On the put side, the 77,500 has a substantial open interest, followed by the 77,000 strike. For the weekly series, the OI PCR for Sensex is at 0.54. टॉकिंग अबाउट द की मार्केट इंडिकेटर्स, मंडे को वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स में लगभग 16% का सर्ज देखने को मिला है। इसने 29 ट्रेडिंग सेशंस में अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। ये संकेत देता है कि ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। द एडवांस डिक्लाइन रेशियो वॉज लार्जली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द डिक्लाइनर्स. दिस शोज अ शार्प सेल ऑफ इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन मंडे. अगर हम की सेक्टर्स की बात करें, टेक्निकली निफ्टी मेटल, मीडिया, ऑयल एंड गैस, सीपीएससी एंड पीएससी स्पेस आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म. अगर हम एफआईआई डीआई डेटा की बात करें, द एफआईआई सोल्ड टू द ट्यून ऑफ 2,575 crores, while the DIIs bought to the tune of 5,749 crores. The FII's long short ratio for index futures is at 18.05, and on a net basis they have bought 7,517 index futures. That's a wrap of today's edition of podcast.
Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.